हेलो गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में गांधी जयंती स्पेशल गांधी जी की इस वाली में कैसे स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन ड्रॉ करते हैं ये सिखाऊंगा। एंड इस फोटो को ड्रॉ करने के लिए मैं A4 साइज नॉर्मल सरफेस पेपर का यूज करूंगा क्योंकि मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला हूँ। एंड क्योंकि मैं आउटलाइन को ग्रिड मेथड से ड्रॉ करने वाला हूँ, इस वजह से रेफरेंस इमेज विद ग्रिड आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए ना ही किसी देरी के। तो ग्रिड को पेज पे अप्लाई करने के लिए मैं 3-3 सेंटीमीटर का गैप देके चारों साइड पे मार्क कर लूंगा, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ओके, तो चारों साइड मार्क कर लेने के बाद अब मैं चारों साइड जहाँ जहाँ मैंने मार्क करता हूँ उसको आपस में मिला दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ग्रिड को पेज पे अप्लाई कर देने के बाद अब मैं ड्राइंग को स्टार्ट करूंगा। तो ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए मैं आई से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं रेफरेंस में जो वही फाइंड करूंगा किस बॉक्स में आई है, लाइक ऊपर से 5th नंबर पे एंड साइड से 4th नंबर पे। तो मैं वही पहले पेज फाइंड करूंगा और वहीं से स्टार्ट करूंगा।
तो फाइनली गाइस आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है और आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी लुक आ रही है। आई होप आप लोग समझ स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फोटो को ड्रॉ करते हैं। तो आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट शेडिंग पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।